Hi. What if I tell you that a t-shirt that you are planning to purchase today on Myntra, actually the decision is made for you in a boardroom which is far away from your home, right? You heard it right. Now is the time to pull back the curtain and understand the black patterns which a seller uses to manipulate you and me as a consumer. सी कंज्यूमर को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है एज अ कंज्यूमर वो सेलर के कंपैरिजन में इनकम्प्लीट होती है, राइट? तो काफ़ी तरीके होते हैं कंज्यूमर्स को मैनिपुलेट करने के लिए. एक आसान सा तरीका है जब आपको एक ख़राब डील मिलती है. जैसे कि आप टूथपेस्ट लेने डीमार्ट जाइएगा, वहाँ पे जब आप जाके शेल्फ में देखते हैं तो आपको बढ़िया से ऑफर्स और डिस्काउंट्स दिखाई देते हैं, राइट? तो आप घर वो सारी चीज़ें लाएंगे अलॉन्ग विद द टूथपेस्ट which you don't require right now. So you have been manipulated to purchase goods which are not necessary at this point of time, right? अब दूसरा तरीका होता है कंज्यूमर्स को मैनिपुलेट करने का, जब आपको एक गलत फिनेंशियल एडवाइस मिलती है. जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो होती हैं, जब हम इंश्योरेंस पॉलिसीज़ परचेज करते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक चलेगी, जिसका प्रीमियम ज़्यादा हो और रिटर्न्स कम हो, राइट? द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ द एंडोनमेंट पॉलिसीज़ विच आर सपोज टू बी widely they are considered as disastrous financial advice, right? So at every walk of life, the moment you step out of your house to make a purchase, there is every likelihood that you will get manipulated by a given seller, right? So the reason behind this being maybe our knowledge of economics is not up to the mark, right? So if you learn economics in the best possible way, right, it becomes nearly impossible for anybody to manipulate you the manner in which they have been manipulating you for a long time, right? So a proper knowledge of economics, it acts as a shield against the manipulative sellers, right? Economics becomes Captain America, which protects you against all the manipulative tactics used by a seller in the market. Now, how many of you are willing to join me in a joyous ride of learning economics and